यू नो इंटरनेशनल ब्रेक एक बड़ा ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आई थिंक क्या होता है. Here is what I think. Here is my logic of the international break. All right, let me tell you my logic of the international break. I think throughout the football calendar, क्या होता है ना, हम our conduct as fans उसका ना एक karma list sort of होती है कि like how are you as a fan, तुम लोगों को ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे या फिर तुम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब देयर इज लाइक अ लिस्ट ऑफ कार्मा थिंग्स सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन, ठीक है. एंड फिर इंटरनेशनल ब्रेक आता है एंड फिर उस कार्मा का ना फल मिलता है आपको, यू नो. सो क्या हुआ है कि आई थिंक इतना नेगेटिव हो गया हमारा कार्मा एज आर्सेनल फैंस कि नॉट ओनली हमें आज पता लगा है कि ओडेगार्ड की इंजरी is probably until December. Confirmed nahi hai, but that's what a IT case says. That Odegaard is probably injured till December. Not expected till December. वो भी confirmed नहीं है. January भी हो सकता है. And Saka is probably अभी उसके scan होंगे आज. But expectation है he will be out for a month as well. So not only are we without our best creator, we are also without our best winger. और मतलब suddenly everything is gone, bro. um या साका देखते, साका का तो खैर अभी कंफर्मेशन आएगा तब पता चलेगा. होपफुली इट्स नथिंग सीरियस यार. होपफुली इट्स लाइक अ स्मॉल इंजरी, बट ओडेगार्ड का इट लुक्स लाइक एट लीस्ट फ्रॉम द गाय दैट he is gone for he's gone for till December at least. So yeah, Odegaard has only played like I think 4 games. And international break has of course shown why it is again super important. इतनी सारी गेम्स खेलना क्यों इम्पोर्टेंट है. नेशंस लीग जिसके लिए पूरा फैन बेस फुटबॉल का उतावला होता है, दैट कम्स विद अ कॉस्ट. बट कोई बात नहीं यार, फुटबॉल इज फुटबॉल मैन. वी विल सी व्हाट हैपेंस विद ओडेगार्ड, वील सी व्हाट हैपेंस विद साका, वील सी व्हाट इट मीन्स फॉर द सीजन. कल एक फुटबॉल रिलेटेड स्ट्रीम करेंगे purely on Arsenal and what it means for Arsenal, especially अगर न्यूज़ आती है Saka is also injured because Odegaard तो हो गया. Ankle injuries are bad, yeah, and it just so weird because it came out of a nothing tackle. मतलब not a nothing tackle, in a nothing game, from a tackle where the guy probably just wanted to win the ball, and now we're looking at a team without Odegaard till probably December. Half a season missed for Odegaard. And the games always of course get trickier and trickier. November fixture is not good. We will play Liverpool, we will play Chelsea, we will play Inter. दिसंबर तक तो अब पता नहीं और कौन कौन से आ जाएंगे यार. रुको रुको इसमें देखने दो. ओडेगार्ड मिस्ड. Odegaard has missed अभी तक Tottenham away, Atalanta away, City away, Bolton at home, Leicester at home, PSG at home, Southampton at home. He will, अगर ये दिसंबर वाली टाइमलाइन सही होती है, he will miss Bournemouth away, Shakhtar at home, Liverpool at home, Preston, Newcastle away, Inter away, Chelsea away, Forest at home, Sporting away and West Ham away. It's a tough run of fixtures, man. And अगर ये दिसंबर तक आ जाता है तो maybe at least he'll come. 2 international breaks, 2 injuries to the most key players. Tough luck for Arsenal, भैया. सही बोला सिद्धांत. Calafiori also got injured in the last one.
Saka got subbed off yesterday. Rice looks absolutely shattered. I don't know what he's doing in the English setup. I don't know why he's going. It is so obvious Rice is not fully fit. And he's playing over and over again. He will break his body. मैं आपको अभी बता रहा हूँ. एक पॉइंट पे इस सीजन राइस को एक बहुत सीरियस इंजरी होने वाली है. एंड इट्स ऑल बिकॉज दीज गाइज आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडीज. फेयर इनफ मैन, इट इज व्हाट इट इज. शो नहीं हो रहा है, पेमेंट हो गई है मेंबर का भाई. अगर कभी कभी ऐसा होता है तो व्हाट रियली हैपेंस इज आपकी पेमेंट रिवर्स हो जाएगी. इन अ डे और टू यू विल गेट अ रिफंड, डोंट वरी. लिवरपूल हैज अपर हैंड. अब वो तो देख लेंगे यार, उनका भी एलिसन गायब है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस मैन. फुटबॉल इज फुटबॉल. कल फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, बट टुडे वी आर डूइंग अ चिल स्ट्रीम. एंड जैसे Pookie Palmer says, no more football. We've addressed the injury concerns because I knew everyone would want to hear about the injury. तो अगर कोई भी आपको देखे और इन द चैट की इंजरी, तो बोल देना पहले 5-10 मिनट में हमने बात कर ली इंजरी के बारे में, ठीक है? चलो, नो इश्यूज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट things not related to football. Now, if you see the title of the stream, it's called a weekend chill stream. It's Friday, the weekend is here, and we'll talk about non-footballing things. But the title also says YouTube AMA. So anything you want to know about YouTube, about content creation, about me, my thought process, what I am doing with the channel, anything you have related to the channel, me, the YouTube community in general, आप मुझसे पूछ सकते हो. I'll try my best to answer all of them as possible. AMA कैफे मार्केट, हाँ बिल्कुल. हाउ इज इट गोइंग? ऑल गुड यार. क्रैकन भाई आप कैसे हो? लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम. हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग दिस इंटरनेशनल ब्रेक? अर्लिंग हालैंड का मैंने सुना आपने कैप्टन बन के रिकॉर्ड गोल स्कोर फॉर नॉर्वे बन चुके हैं वो. जोकर टू रौनक यार, आई डिडंट सी. I was planning to see it, but then the wave of negative reviews plus it being a musical really ticked me off यार. तो मैंने नहीं देखी. आई डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट माई टाइम एंड मनी, एंड आई थॉट कि नहीं करेंगे हम, कोई बात नहीं यार. जिनके डेब्यू नहीं हुए उनको चांसेस दे दो इंटरनेशनल गेम में. यार देखो, ये मैनेजर को भी पता है कि ये लंबे टाइम तक नहीं है, तो ही डजंट गेन एनीथिंग फ्रॉम. बट ये फुटबॉल छोड़ दो, फुटबॉल छोड़ दो. विल टॉक अबाउट फुटबॉल लेटर. माई बिगेस्ट फियर इन लाइफ, इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू बी ऑनेस्ट हार्दिक. आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस फियर, बट आई थिंक visible, like, how do I explain this? Because it's such an obvious thing that a lot of people probably have it, but I just feel मेरे भी है. मेरे को, I have a very genuine fear of old age. I can't, and it's not even death, it's just old age. And what encompasses old age? I think old age because there is a fear of mortality. एक mortality दिखने लगती है अपने अंदर कि आप कितने vulnerable हो, कितने temporary हो. But also your body starts breaking down or your brain stops functioning as fast as possible and stuff like that. तो हार्दिक, मेरे को पता नहीं क्यों ओल्ड एज से बड़ा डर लगता है. बट आप लोग बताइए, व्हाट इज योर वर्स्ट फियर? कुड बी स्पाइडर से लेके एनीथिंग लाइक दैट. कुड बी लाइक सुपर कॉम्प्लेक्स आल्सो, कुड बी सुपर इजी कि मुझे तो आई डोंट नो, हरे सब्जियों से डर लगता है. आई डोंट नो. Philly news, new Diddy. Yeah, I saw, man. It's fucked up. 1 year completed. Next year का extension दो अब से ऋतुराज. Congratulations for 12 months यार. एंड जैसे यार ऋतुराज, सब चीज़ें खुद करनी चाहिए. आप भी आत्मनिर्भर होके एक्सटेंशन अपने आप ले लीजिए. बट थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल फॉर 12 months ऋतुराज. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट. 12 months is a long long time to be associated with the channel, especially as a member दोस्त. Have I watched Better Call Saul? I watched, I think, the first season of it. Um, yeah, that's like, it was a good shout. It's a good show, man. मैंने पूरा नहीं देखा तो. Where do you want to see the channel in 3 years down the line, content wise? Yeah, so for me, look, I know for a fact कि channel को next level ले जाने तक कुछ कुछ चीजें बहुत important होती हैं. Number one is, of course, सबसे important is consistency. Um, consistently video upload karo, consistently stream karo. My estimation is, to be a very successful YouTube channel, you have to consistently for at least 1 year do 100 hours of streams a month. I think 100 hours a month for a year will make sure that you are growing no matter what. But 100 hours is a non-negotiable. That's my estimate. Of course, videos are also a good part. It's a good way of growing your audience. But my reality of life is that I have invested most of my money and most of my time in my PhD.
and that takes priority over everything. um, but that is work wise. In my life, it's my relationship, my PhD, and then this YouTube thing. So the way I am growing, I am really happy about it because of the things till now I have achieved, which is, अगर आर्सेनल से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, देन फुटबॉल विद दक्ष. उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके, गोइंग बियॉन्ड द यूजुअल रिव्यूज एंड प्रीव्यूज, अगर कुछ बात करनी है, जैसे सिटी वाले केस की बात हुई थी, आई एम ऑन टू दैट. ठीक है. And so from what I have done till now with this channel, I am okay with it. I'm satisfied. I am content is what I would say. Am I completely elated? No, because at this point in my head, I should have been, or I would be, at 25K. But it's all about consistency, and I have nobody else to blame but myself. That being said, um, in terms of growth, in terms of the changing content, in terms of the rebrand, I think it's been a good move. Yeah. But 3 years down the line, अब आपने question जो पूछा है, look bro, if within the next year and a half, I won't go 3 years down the line because I think that's too big a timeline to plan. I usually max to max plan for 12 months. But in a year and a half max, if I hit 80 to 100K, I'll be very happy. And I know एक साल में दक्ष भाई 100K तो हो ही जाएगा, is not simple. Especially like I said, मेरी अगर rate of growth is around 1,000 subs a month or 1,200 subs a month, I think year and a half में 80K करना है would be a phenomenal job. Yeah. Have you watched Entourage? Yes. A long time back though. Uh, दक्ष ब्रो ETH 2028 तक रुक गया, मैन्यू के चैंपियनशिप जीत जाएगा. अरे नहीं, उससे पहले निकाल देंगे उसको, मुझे लग रहा है. Losing your loved ones is the only answer. That's true actually. Loneliness, losing your loved one is a huge thing. Deadly disease, yeah. Internal disease. बुड्ढे तो आप अभी हो सर शायद. Fantastic. Spiders and snakes. Do you think fear of dogs is a thing because I'm scared of them? People say, why are you scared of dogs? I think most of the fear of animals usually comes from something traumatic you have seen either in real life or on the screen. For me, the idea that a bite from a snake can completely paralyze you, kill you वगैरह is a very scary thing for me. And I don't take any risk. मुझे सांप दिखता है मैं भाग जाता हूँ. मुझे स्पाइडर दिखता है मैं भाग जाता हूँ. एंड स्पाइडर का मेरा फियर्स क्यों है? बिकॉज एक बार क्या हुआ था, आई टुक अ शावर, आई मैंने अपने आप को ड्राई करा था शावर लेने के बाद, एंड मेरे हाथ पे ना बॉयल्स हो गए थे. बॉयल्स मतलब फफोले टाइप्स हो गए थे. एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड, एंड आई थिंक हमने एक डॉक्टर को दिखाया था या फिर मेरे पापा ने ही बताया था. इट लुक्ड लाइक, कभी कभी क्या होता है कि स्पाइडर से एलर्जीज हो जाती हैं, और मेरी वही स्किन में एलर्जीज पूरे हाथ पे हो गई थी. एंड सो वही है कि लाइक इवन इफ अ ब्लडी स्पाइडर्स ऑन योर टावल एंड यू रब इट अगेंस्ट योर स्किन, इट्स ओवर फॉर यू. एंड देन आई रेड दिस हॉरिबल थिंग दैट a lot of times हम लोग स्पाइडर्स को सोते सोते swallow कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता. देन द फैक्ट दैट दे आर सो स्मॉल स्पाइडर्स कि वो आपके कान में भी घुस जाते हैं, वो मेरे को बहुत डर लगता है कि भाई मेरे को पता नहीं चलेगा. एक बार मैंने अपने कान में ऐसे कर रहा था, आई गॉट लाइक अ स्मॉल टिक आउट ऑफ इट एंड आई डोंट नो हाउ इट गॉट इन देयर. इट्स क्रेजी. पेनफुल डिजीज, स्नेक्स एंड हाइट. हाइट का तो खैर काफ़ी कॉमन है. हाइट का तो काफ़ी कॉमन है. Virgin, all right. What's my research topic? We'll talk about it later. We'll talk about my PhD later. I have a fear of dogs. Your favorite Indian cuisine, like Rajasthani, Bengali, Mughlai. Mughlai cuisine is my favorite. Yeah. Food choking when I'm alone. Oh, हाँ, ये भी हो सकता है. Arjun Kapoor का acting. कैसे हो Viska Barsa? Nice to see you. Any new anime recommendations? Yeah, अभी तो I've been on and off watching Dragon Ball Super again because I played Dragon Ball Sparking Zero, and भाई मेरा love for Super came back. So I'm just watching Super back again. बाकी I don't know really, man. I don't know really अभी कौन सा आएगा. Had no clue. Hope to see Dr. Dakshan. Thanks, Laksh bhai. Why do you start the channel even when you're so capable in academics? Is it your passion or time pass? Yeah, here's the thing. I saw Manas and Nidhi doing it, okay? Uh, Talking about football, and I was like, even I like to talk about football, and I honestly never expected it to get this big. Honestly, अगर इस point में मेरे 4-5K होते, I'll be like, हाँ, यही, like it's a nice time pass. This is something I like to do.
and I like talking about football with a nice dedicated audience. It doesn't have to be like 1,000 people watching. It doesn't have to be like 800 people watching. As long as there's a dedicated audience, like I know Mano for example. मेरे को अगर ऐसे लोग दिखते रहेंगे चैट में, एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी. आई एम वेरी हैप्पी. Then I realized कि a lot of people like what I have to say and like the way I stream and like the way I make videos whenever I do make them. So maybe this is something I can also monetize. So it's not only a passion or a time pass, it's also a money making like it's also a revenue stream for that matter. So that's how I did it. But to start the channel was purely out of I like football, I like Arsenal, and I saw my friends do it and I was like isko kar sakte hain. I'm planning to visit OT. All I ask is can anybody give me good enough reason to do that? Please please help me. Good enough reason to visit OT. I'll tell you one thing. In life, if you haven't watched your favorite football team play live even once, trust me, no matter even if it's like your team playing a championship team, it is an experience you will never ever ever forget. It's a beautiful experience. आप जिंदगी भर याद रखोगे. आप जब वो क्या है व्हेन यू आर केपेबल व्हेन यू हैव द एबिलिटी डू थिंग्स. ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आपकी इतनी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप बोलोगे अभी टाइम नहीं है, अभी ये करना है, अभी वो है, जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है, ये हो जाएगा वो. वेन एवर यू हैव द एबिलिटी एंड द केपेबिलिटी एंड द टाइम, डू समथिंग ब्रो. What kind of YouTube channels do you usually watch apart from YouTube? I like watching review channels a lot in terms of reviews of games, reviews of movies, chess. What else do I like? Yeah, man. Like it's अभी तक अगर मैं अपना होम पेज देखूं, it's football, it's reviews of movies or anime or game and chess. That's it. Literally, that's it. All those three things. I haven't watched. It's on my Crunchyroll homepage. तो मैं सोच रहा हूँ देखूं, but अभी टाइम नहीं मेरे पास यार उतना. You know, like how Sidemen was created with studio and multiple YouTubers coming together. Other football YouTubers also have done it. Do you guys think of doing something similar, like a proper channel, not Charles Lapate? The thing is this. I think the space right now is collaborative enough कि अगर आप चाहो आप किसी के साथ collaborate कर सकते हो. उसमें भी लेकिन caveats हैं, because some people are doing it full time, therefore they will obviously have more time. Some people don't do it full time, they have their jobs, they have their careers, therefore they don't do it full time because of all those things. Timing matches. I want to collaborate a lot more, but sometimes my timing does not match with other people. There have been so many times when Achint texts me, या फिर Darshan texts me, या फिर Lala asks me, and I can't do it because either I'm off to work, either I have some पढ़ाई, or it's or when I have time it's too late there. तो ये सारे टाइमिंग वगैरह के भी बड़े इश्यूज होते हैं. बट एक sort of like people coming together and creating a singular channel, I mean, it all depends on a lot of things. Number one, you should have a nice relationship on screen and off screen. I think that's super duper important. अगर आपकी एक ऐसी रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन अच्छी होती है, देन पीपल विल वांट टू वॉच इट. अदरवाइज कोई भी कोलैबोरेट करके कुछ भी बना सकता है. आप काफ़ी सारे शोज देखते हो, लाइक जैसे बाबा एंड ब्रोज इज वन शो एंड नाउ बाबा एंड लोल्स इज अनदर शो. Mohawk does it with all the United fans as well. Liverpool, Manas and Nidhi do a Liverpool Mandli as well. So there are collaborations like that. But a proper channel is a lot of work, yeah, a lot of work. And I think right now people are trying to maximize their own channels right now. तो मेरे को नहीं लगता है कोलैबोरेटिव चैनल के अभी स्कोप ज़्यादा है. अभी तो हम लोगों ने अपने खुद की ऑडियंस एंड खुद की कम्युनिटी को मैक्सिमाइज नहीं किया है. अभी तो हम लोगों का खुद का कंटेंट अभी पूरा मैक्सिमाइज नहीं. आई थिंक व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन वी आर ऑन दैट पाथ, then I think those collaborative channels become much more common. Dogs तो cute होते हैं. I agree. How did you start collabing with creators like Baba and Nidhi bhai? Nidhi Manas I knew from before. Then we did 2 years ago a stream जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हो गए थे एंड हमने सीजन का प्रीव्यू किया था मानस निधि के चैनल पे. उधर से मैंने सबके नंबर्स लिए, उधर से मैंने सबसे बात करी. पहले मोहक के चैनल पे करा, फिर बाबा के चैनल पे करा, एंड ऐसे ऐसे करते करते यार आई थिंक सबके साथ हो ही गया. So it's just genuinely Manas Nidhi brought us all together. I took their numbers and just asked them. Us time I think everyone was not as big as they are right now, so maybe it was also a little bit easier. Oh yeah, cats better, dogs haunt me. Daksh bhai, have you ever been
to the US. Why did you choose Ireland? I have been to the US. I've been to Stanford. I was there for almost a year. And why did I choose Ireland? There were multiple reasons. One, uh, it's close to the UK where my girlfriend is, so it makes the relationship easy. That's one of the most important reasons. But also, the supervisor I have here is a fantastic, fantastic supervisor. It's an English speaking country. Language isn't really an issue. Um, so, in terms of assimilation, it becomes easier. The supervisor I have is fantastic. He has a lot of knowledge about Europe, NATO, and the area I'm super interested in. It is also a country जहाँ पे a lot of multinational companies के second headquarters are there. So most companies have twin headquarters. Fangs companies के twin headquarters होते हैं. Usually companies के second headquarters Ireland में होते हैं. So it's a great tech space as well if I want to pivot away from academia into a private sector job. So अगर आप इसका पूरा pros and cons देखोगे in terms of language, culture, assimilation, my supervisor, the career prospects, and my relationship, like 6 7 factors are completely in the works for Ireland. There were pros, there were other pros for other places as well, and there are some cons to Ireland as well. But I thought on the balance, it's a very very good it's a very very good place to be. My girlfriend is British. No, she's Indian, brother. I want one reason apart from football to be honest. I wanted to be productive as well. Can I do some sort of work or gather experience for my portfolio? See, here is what I think. Um, if you want to make it productive, you'll have to see what you can and what portfolio it is. Like, for example, if you're a photographer, I am sure you can do something about it. If you're a videographer, sure. Other than that, I mean, look, keep some experiences sacred, you know. लाइक बहुत लोगों की ना एक आदत होती है कि जो चीज़ें एंजॉय करने के लिए होते हैं वो एंजॉय भी नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आई नो पीपल who watch TV shows at 2x. And I'm like, why? Why are you watching TV shows at 2x? Why are you skipping this point? ठीक है ना, ये वाला सीन इंटरेस्टिंग नहीं है, शो को मैं 40 मिनट नहीं दे सकता, 20 मिनट में सेम ही चीज़ तो दिख रही है हमें. एंड आई एम लाइक, ब्रदर, इफ यू रियली डोंट वांट टू एंजॉय इट देन डोंट वॉच इट ना. ये क्या होता है, 40 मिनट को 20 मिनट में काश कर दूं एंड गाने स्किप कर दूं, या फिर ये वाला सीक्वेंस स्किप कर दूं, या फिर ये वाला आर्क स्किप कर दूं. इफ यू डोंट वॉच इट देन डोंट वॉच इट एट ऑल. ये क्या मतलब, अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली की मैं रिलैक्स करूं, बट यू नॉट रियली रिलैक्सिंग, राइट? सो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि सम एक्सपीरियंसेस जस्ट शुड बी सेक्रेट. रिलैक्स को रिलैक्स करो, ठीक है? The way the country has leveraged its tax system for more influx of foreign capital, especially post Celtic banking crisis, has made Ireland go sweet spot in today's economic scenario. Well, for companies and businesses, sure. For wealth inequality, I don't know, man. Like I think एक बहुत ज़्यादा wealth inequality है, and it's gonna boil over at some point मेरे हिसाब से. How do you manage your life? Like, you do stream, PhD in a relationship, make content, etc. Well, you'll just have to prioritize some days, brother. Like, for example, I haven't streamed for 2 days, and I haven't streamed for 2 days because yesterday I took a day off. Today I'm a bit sick, so I got another day off, but also I'm studying most of the day today. ठीक है? So, like, in some life, I know for a fact today relaxation in the most sense is going to be less because I'm going to create content today and I'm going to study for the rest of the day, and I'm going to be tired by the end of the day, and then I'm going to go sleep. But yesterday there was no streaming, there was full relaxation, and that's it. Like, yesterday I got my day of relaxation. So some days you'll have to prioritize some things, other days you'll have to prioritize other things. Isn't it a personal choice to watch or listen to a podcast at 1.5x or 2x? Everything is a personal choice. My thing is this, that if you are consuming something for relaxation and then you're listening to it quicker to save time, I don't think it's relaxation. Of course, if you feel you it's completely normal for you, go for it. Mera to usme genuinely, it doesn't change anything for me. But I really don't like it when people are watching movies with me and then they skip past some parts because it's boring. I'm like, ye kya hota hai? Are you in Dublin or Belfast? I'm in Dublin, brother. I'm in Dublin. Rashford, poor game, and Mohawk be like, मैं Rashford को, अरे बस. No football, please. No football. The topic is a chill stream. We can talk about YouTube. We can talk about everything. We can talk about content creation space. We can talk about Indian YouTube in general. Doesn't even have to be football. But no football, please. How are you? कैसा है डब्बू भाई? I'm good, brother. तू कैसा है? तू बता. तू फिर से Discord छोड़ गया. अब फिर से आ जाएगा. फिर से 2 दिन में छोड़ देगा.
Do you think video has a higher ceiling than streams? I don't know. In my personal experience, I get more subs from videos, but I get more money from streams. And I think it's also very logical because when you make a video, number one, हम लोग videos हिंदी में बनाते हैं. उनकी locations जहाँ पे they get broadcasted are India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, stuff like that. Out of all these countries, I think Pakistan में, नेपाल में and Bangladesh में advertising allowed नहीं है YouTube से. So you don't get any ad revenue from that. You do get subscribers, like I said, but you don't get any ad revenue from videos, like barely anything. बहुत कम होता है. On the other hand, when you do streams, and मेरी streams तो छोड़ दो, but let's say you see Baba or Mohak or any big YouTuber stream, right? You see super chat, super chat, super chat, super chat, super chat, plus a little bit of ad revenue as well, right? So I think personally, streams are the best way, at least in my experience, to make money. But if you want growth, shorts and videos are the best way. So all of these things mere hisab se, like you'll have to do a balance. So depending on what your definition of ceiling is in terms of growth or in terms of revenue, I think that matters a lot. Rugby is pretty big in Ireland. It's huge, bhai. It's huge. How has your journey been as a YouTuber? It's been really rewarding, really nice. There have been some moments of struggle where I had an identity crisis in terms of what content do I want to make, what content I want to put out, how often do I want to put out content. There were times when I would not work on my PhD for weeks and I'd only think about content and streams and this and that. Like, for example, I think before the international break happened, I was on 3 streams a day. Okay, this is like few days ago, and as fun as it is, it's not sustainable for me. I gained a lot of subscribers that day. I gained some from Baba, I gained some from my stream, I gained some from Mohak. Okay, it's pushed me to like less than 100 away from 21K. But I know it's also not sustainable. But I also know अगर मैं ये करूँगा मेरी growth incredible हो जाएगी. So वही वाली बात है दोस्त, मतलब it's all about sort of balancing what I want. Struggles मेरे को तब होते थे जब growth नहीं होती थी. And I used to be like, is it a content thing, is it a slow thing? Like, for example, your growth absolutely crashes जब season खत्म होता है, next season शुरू होता है. ठीक है, your growth absolutely crashes. You get no views, you get no subs growth, your revenue absolutely tanks. तो आपको उन टाइम के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है. ठीक है. एंड देन उसमें मेरे को भी डाउट्स होते हैं कि यार मतलब अभी यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैं अभी तक 17K पे अटका हुआ हूँ, कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा है. इनफैक्ट दिन के 3-4 लोग जा रहे हैं, फिर 5-6 आ जाते हैं, फिर 2-3 और चले जाते हैं. सो इट्स अ नेट जीरो ओवर इंटायर वीक. सो क्या करें क्या करें, कुछ कुछ डाउट्स भी होते हैं कभी कभी. बट इन जनरल आई थिंक अगर मैं एक लॉन्गर टर्म व्यू देखूँ, आई थिंक आई रियली एंजॉय माई जर्नी राइट हियर ब्रो. आई रियली एंजॉय माई जर्नी. And I have plans. I know where I want to expand to next. I know what areas to target next. I know what collaborations to target next. And I know what collaborations to keep and what collaborations not to keep. So मुझे पता है कि अब आगे चलते चलते कैसे करना है. But I think from my first year to now, huge amount of change. Huge amount of change. I used to engage in a lot of things in my first year which were okay, but in terms of growth in numbers or in terms of revenue really did not help my channel. So it was a learning experience. आप चीज़ें सीखते हो as content creation goes. But मेरी journey तो मेरे हिसाब से it's been, I've been grateful for it. It's been a lot of good luck in the beginning. And yeah, I made some really nice friends. Yeah, I've made some really nice friends. But you need to have subscriber base for those streams. True. I think subscribers grow करने के लिए सब मैंने जैसे कहा बेस्ट तरीका is videos and shorts. अगर आपके कम subscribers है then shorts and hope that one of them just absolutely picks up. ठीक है. Then videos to gain subscribers and of course collaborations. But then you'll only get collaborations if you are providing something to another creator and they are providing something to you. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. And multiple ways to go about it. गुड पब recommendations इन डबलिन बहुत है यार. हाउस है, पैलेस बार है, ग्रेव डिगर्स है, और और कौन से हैं.
I mean, you can go to so many places, Jonathan. There are so many good places. I personally love Grave Diggers. I personally love um what was that thing called? Was it Brogans? Brogans is also nice. What is that Viking one, man? Wait. What's it called? I forget. I forget. You can also go to the Brazen Head. बहुत सारे अच्छे pubs हैं. Dublin तो is like paradise for pubs, man. Paradise for pubs. Do you think there will be a DBZ Super Season 2? अभी तो वो आ रहा है ना, डायमा वाला आ रहा है जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स बच्चे बन जाते हैं. सो अभी वो वाला 2024 में वो वाला आएगा, DBZ डायमा. Daksh bhai, if you are going to shift to India, then what's the most likely city you would choose apart from your parent city? Probably Bombay or Bangalore. Most likely Bombay though. Indian YouTube is terrible. Rajat Dalal, Elvis Yadav, and Gunda YouTubers. I think that is a side of it. But there's also other YouTubers who I think do really, really good work. Of course, some of them will make political content, so you will be like that. Okay, fine. Some of them are genuinely funny. Like I think Arpit Bala is genuinely hilarious. He does say some stupid things, but he is genuinely hilarious. बहुत अच्छा है. ये ओनली फैंस कल्चर है क्या आयरलैंड में? ओनली फैंस कल्चर इज ट्रांसनेशनल डूड, इट्स एवरीवेयर. पिरामिड ऑफ गीजा के हिस्ट्री पर कुछ बताओ भाई. ये बड़ा रैंडम सवाल आ जाता है कि हम यूट्यूब की बातें कर रहे हो, कोई पिरामिड ऑफ गीजा की हिस्ट्री पूछता है. आई एम नॉट रियली श्योर. कल मैंने चैनल पे काफ़ी टैक्टिकल टाइप वीडियो बनाया था रिगार्डिंग यूनाइटेड, बट पब्लिक को समझ में नहीं आता. मैंने कंटेंट बनाया 3 डे स्पेंड करके, बट उस पर व्यूज़ नहीं जा रहे भाई. यार अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस यार इज व्हाट वी थिंक कि लाइक ओह लोगों को ये चाहिए वर्सेस व्हाट द पब्लिक थिंक्स कि हमें एक्चुअली ये चाहिए, बहुत डिफरेंट होता है. देर वॉज आई रिमेंबर मैं फर्स्ट ईयर में स्पेशली कभी कभी वीडियोस इतनी मेहनत करके बनाता था एंड आई वाज लाइक ये बढ़िया करेगी वीडियो, एंड देन नहीं करती थी. इट यूज टू बी 9 out of 10. लाइक मतलब इट विल बी ए लो परफॉर्मिंग वीडियो. आई बी लाइक क्या ही पॉइंट है, मैं क्यों बनाता हूँ व्लॉग. लोग कहते हैं व्लॉग व्लॉग व्लॉग, बट देन व्लॉग को व्यूज़ नहीं मिलते. मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा लोगों ने कहा ये करो, मैंने करा, उसका कुछ व्यूज़ नहीं आया. लोगों ने कहा हॉरर स्ट्रीम करो, मैंने एक प्रॉपर पैरानॉर्मल वाले बंदे को बुलाया बट लोग आए नहीं, तो फिर क्या हॉरर स्ट्रीम करनी है. सो ये सारी चीज़ें विल ऑलवेज बी अ सेटबैक. The idea is to balance. I think there are two types of content a creator makes, one that they have to make and one that they want to make. Sometimes to gain an audience for the content you want to make, there is content you have to make. And then you also have to understand कि कभी कभी ऑडियंस को नीश चीज़ों में बहुत कम ही ऑडियंस आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फुटबॉल में सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पे करोगे, you will have to agree with the fact कि भाई a lot of people are just not into data. A lot of people are just into Ronaldo Messi. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. अगर मैंने आज स्ट्रीम का टाइटल डाल दिया हु इज बेटर रोनाल्डो और मेसी, आई प्रॉमिस यू ये 400 की वॉचिंग होती 200 की जगह. दैट्स प्रीटी मच इट. ठीक है. एंड सो वही बात होती है, टू मेक द कंटेंट यू वांट टू मेक, you have to get the content. You will have to make content that you have to make. That's it. Sometimes it will be the most trendy thing. क्या ETH, अब तुमने tactical video बनाया, maybe people just don't want the tactics. That's it. Right? जीरो वाला यूसीएल बैच क्यों दिया है किसको? भाई देखो, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को यूसीएल वाले बैचेस मिलते हैं. दैट्स इट. डॉक्टर अयान इज ऑल्सो हेयर भाई. कहाँ है डॉक्टर अयान? डॉक्टर अयान इज ऑल्सो हेयर. आप कब बना रहे हो? क्या बना रहा हूं मैं? स्ट्रीम लेटेंसी ज़्यादा है, अब जो है सो है यार. व्हाट्स योर चेस ईलो? भाई आई हैवंट प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई जस्ट स्टार्टेड अगेन. आई थिंक इट्स 720 राइट नाउ. 717 और 720, और मे बी इट कुड एक्चुअली बी 690. मुझे नहीं पता. 400 व्यूअर्स आई बेट 2000 हो जाते. एंड दैट्स द थिंग. I feel there's an audience for everything football made simple does very well. Well, that's the thing. If you, a lot of people will make tactics. There's 1,000 videos on football tactics on YouTube. ठीक है? Now, if you want to reach a wider audience that is into tactical stuff, make it in English. But then if you're not comfortable in English, then you actually make it in Hindi and get your content off the floor. बट हिंदी में इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जो भी जोग्राफीज हैं जो हिंदी यूजुअली कंज्यूम करती हैं, what is the percentage of people who actually want to read tactical or data or
I don't know, physiotherapy related videos. I don't know. Let's say I was a physiotherapist and I just made a channel based on, let's say Sadik Bhai. Sadik Bhai is a doctor, and let's say Sadik Bhai was a physiotherapist. ठीक है? Sadik Bhai makes a channel only on injuries, but वो हिंदी में ही बनाएंगे. So how many people who consume Hindi content are interested in football is a subset. Uska subset, people who are interested in injuries, that is a very small subset. तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से. समटाइम्स यूल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट कि मैं अगर इसी कंटेंट में मेरे को अगर इतना नीश जाना है तो मैं यही करूंगा. प्रोज, अगर आपका चैनल टेक ऑफ करके यू बिकम द गाय फॉर द कंटेंट. कॉन्स, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू फाइंड योर कंटेंट. सिंपल सी बात है. डिड यू गो टू न्यूयॉर्क सिटी डबलिन पोर्टल? या आई वाज देयर. Indian football audience want mirch masala videos just like Baba Shah. And that's the thing. And I don't blame them for it. There is no like, अरे ऑडियंस तुम कब वो बनोगे, इंटेलेक्चुअल बनोगे. पीपल watch YouTube for fun. A lot, some people, of course, watch it for entertainment. Some people watch it for education. Some people just watch it for fun. And that's where I don't blame the viewers when something I've poured my heart and soul into it doesn't get the views. Because अगर एक बंदे के पास आफ्टर अ टफ डे ऑफ वर्क 1 घंटा होगा रिलैक्स करने के लिए, तो वो क्या देखना चाहेगा? वो क्या देखना चाहेगा कि मैं, बाबा, मानस, निधि कैसे एक दूसरे को बैंटर कर रहे हैं, या फिर वो एक ऐसी वीडियो देखना चाहेगा या फिर एक ऐसी स्ट्रीम देखना चाहेगा जहाँ पे कोई इंजरीज की बात कर रहा है. इंजरी में फिजियोथेरेपी में ये आपकी एसीएल होती है, ऐसे मुड़ जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट what people choose to watch in their limited amount of time, and I don't blame them for it. Not mobile. Haven't played mobile. Dakshbhai, have you ever seen Ashes at Lords or any other ground? No, I haven't. I haven't watched cricket in a foreign stadium. TFHD tactical point of view अच्छे से है, but उनके tactical videos इसलिए अच्छे चलते हैं because he also make reviews of every possible game as well. तो जब रिव्यू देखने के लिए, मान लो एल क्लासिको होता है, ठीक है, मान लो एल क्लासिको होता है एंड एक बहुत बड़ी धुलाई हो जाती है, लेट्स से रियल मैड्रिड की, बार्सिलोना ने 4-5 गोल से हरा दिया, एंड उसके बाद एक चैनल ने इस पे रिव्यू बनाया, तो सारे बार्सा फैंस आएंगे बिकॉज विच फैन डज नॉट वांट टू हियर हाउ ग्रेट हिज क्लब प्लेड इन अ पर्टिकुलर गेम, राइट? सो उधर फैन फ्लॉक कर गए, दूसरी बार भी फ्लॉक कर गए जब बारसा फिर से जीत गया क्योंकि उसने वीडियो बना दिया. एंड उसके बाद then you start making the video, let's say a tactical video, then they'll be like, हाँ ये बंदा बारसा के बारे में भी अच्छा बोलता है, चलो इसके tactical video भी सुन लेते हैं. And I'm not saying if 1,000 Barca fans come watch your video after an El Clasico beating of Real Madrid, all 1,000 of them will subscribe and all 1,000 of them will watch your other videos. A lot of times what happens is when Arsenal lose, I get a clock. I don't know how many views I get on videos after Arsenal lose. ठीक है, जब Arsenal हारती है बड़े views आते हैं, लेकिन let me see. जब आर्सेनल हारी थी, एक सेकंड, आर्सेनल जीतती है तो 3, 4, 5 हज़ार व्यूज आ जाते हैं. आर्सेनल हारी थी, 10,000 व्यूज आए थे मेरे, ठीक है, 10,000 व्यूज आए थे, कमेंट्स थे अराउंड 100 से ऊपर. लेट मी शो यू समथिंग, नॉट शो यू एक्चुअली बिकॉज आई कांट शो यू दैट, बट in terms of the analytics of the video, in terms of the audience, 60% of the people that watched that video did not subscribe. So in those 10K views, 6,000 views came from people who were not subscribers and did not subscribe afterwards also. ठीक है? And it's the reality of it, right? So if you make content, people will come. Not all of them will watch. Some of them are just there to watch you cry, get angry, whatever. But अगर मैंने मान लो एल क्लासिको के बाद एक वीडियो बना दी प्रेज करते हुए बारसा के लिए, some of them will subscribe and some of them will watch my other content also. And it just happens like that. So this is the game for, I think, content creation, यार. आप niche content तभी try कर सकते हो when you have good subscriber base. Exactly my point. So sometimes, like I said, you'll have to have the videos you have to make and sometimes the videos you want to make. And that's the reality of everything. Or you just get ready for the grind of having a niche topic and then going forward with that niche topic and hoping it blows up at some point of time when it becomes super relevant. For example,
अगर एक बंदा सिर्फ ड्रैगन बॉल जी पे वीडियोस बनाता है, ही नोज उसका कंटेंट कब राइज करेगा, व्हेन अ न्यू ड्रैगन बॉल गेम कम्स आउट और अ ड्रैगन बॉल शो कम्स आउट एंड स्टफ लाइक दैट. आपने कितनी बार देखा हुआ है, there was this guy, okay, there's this guy who plays video games. He's an ex army guy, and his videos only exploded once he started giving, like, he started playing all these Call of Duty games या फिर Ghost Recon games as a proper tactical game. And that's when it took off. He said Marine plays Ghost Recon, boom, फट गई गेम, उसका चैनल फट गया, exploded. Because one day people found out, one person really liked it, shared it, बहुत हुआ, बहुत बड़ा, and that's it. So if you're making niche content, you'll have to be very, very patient here. आप बनाओ tactical videos. Yeah, I don't like making tactical videos because of two things. One, there is no one right way of reading tactics. ठीक है. नंबर टू, जब तक आप अपने टैक्टिकल वीडियो बनाओगे और जिस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ, तब तक गेम इतना पुराना हो जाएगा. लाइक, इफ आई मेक अ टैक्टिकल वीडियो टुडे अबाउट एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड राइट नाउ इन एस्टन विला मैनचेस्टर यूनाइटेड. आज की न्यूज़ है ओडेगार्ड की इंजरी, आज की न्यूज़ है एरिक टेन हाग रुक गया है, आज की न्यूज़ है कोल पामर को प्लेयर ऑफ द मंथ मिल गया है, आज की न्यूज़ है ये अबाउट लिवरपूल, आज की न्यूज़ है ये अबाउट बारसा, आज की न्यूज़ है ये अबाउट रियल मैड्रिड. Nobody cares about Aston Villa versus Manchester United. So either you can make quick videos, and there's a very good possibility that quick tactical video the next day is not the actual reading of the tactics, is not the proper tactical video. Or of course जो आप बाकी किसी को करते हो, जैसे somebody said football made simple, आप football made simple देखो रात को, ओवरनाइट अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो उसी को प्रिटी मच उसके पॉइंट्स रखते हुए, एंड दैट्स इट, एंड यू कैन डू दैट, दैट्स कंप्लीटली फाइन. As long as you, I think, give credit and stuff like that. So yeah, I think content in football especially मेरे हिसाब से is a huge, मतलब उसकी कंटेंट इन फुटबॉल हैज़ अ वेरी स्मॉल शेल्फ लाइफ, बड़ी जल्दी एक्सपायर हो जाता है, हमें याद ही नहीं रहता क्या हुआ है. ठीक है. इटली वर्सेस बेल्जियम, इंग्लैंड की टुडेज न्यूज़, या पॉल, लाइक, पॉल पॉगबा बैक. अब इट साउंड्स लाइक सच एन ओल्ड न्यूज़ कि पॉल पॉगबा का बैन रिड्यूस हो गया, बट अगर आप याद करोगे इट्स जस्ट अ 4 डे बैक थिंग. ठीक है. और तो बहुत कम चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से. Who do you hate the most, Elby, Nobin or Hamza? Hamza most likely. I really like City creators except Hamza. Uh, Mostly not because Hamza is a City fan, because Hamza used to be an Arsenal fan. That's what I hate him about. I hate the plasticity. If you're a City fan, respect to you, man. I have no issues. I have absolutely no issues with anyone being a City fan. But अगर आप प्लास्टिसिटी दिखाते हो, उसमें मेरे को इशू होता है कि मतलब आप किस, क्या आपका क्लेम भी क्या है, आपको मैं सीरियसली लूँ भी क्यों. आप फुल टाइम नहीं हो, मैं फुल टाइम तो नहीं हूँ, आई डोंट थिंक मैं काफ़ी टाइम तक बनूंगा, एंड मेरे फुल टाइम विल ओनली डिपेंड ऑन रेवेन्यू, इट वॉन्ट, it honestly will not depend on subscribers. if i if I have 30k subscribers or 50k subscribers and I'm earning in like lakhs a month, then fantastic bhai, then full time works. But अगर मेरे 100 150 200 के हो और मेरी महीने की कमाई 20 30 हज़ार हो, then not really यार, not really. I usually enjoy tactical videos of old iconic games like that 5 10 years ago, like Yash used to do in lockdown. फेयर इनफ परितोष, बट वही बात है, अगर ये आइडिया अच्छा लग रहा है किसी को और मैंने एक वीडियो बनाई, तो आप होगे, मे बी आपके साथ 2,000 लोग और होंगे, 1,000 लोग और होंगे जिनको वो पसंद आएगा, एंड दैट्स प्रॉबेबली इट, राइट. एंड दैट्स द थिंग. इन दोज, हम एनीवेज, मैंने आपको बताया कि टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस पे 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो वही वाली बात है. Hi Dhruv bhai, how are you? Really love watching your videos. Thanks for entertaining us. No problem, सुरेंद्र भाई, आप कैसे हैं? आई होप आप भी ठीक हो. अच्छा लगेगा. About Kubarsi, what are your thoughts? My thoughts are that people should learn how to read the stream, what is the topic, and stay relevant to the topic. क्योंकि कुबारसी तो ऐसी चीजें नहीं करेगा. कुबारसी is great at reading the game, but somehow some कुबारसी fans are not great at reading the title. ध्रुव कौन है? कुछ लोग को बस पता नहीं क्या हो जाता है, ध्रुव भाई लिखने का मजा आ जाता है. What places in the UK I have been? Just mostly London and Oxfordshire. That's it. I I try to stay in Ireland. Like I said, I don't have much time usually in my life, but abhi when I get my visa back, my residence permit back, I will travel all around Europe. बहुत हो गया.
Can you tell me any Arsenal chants? Yeah, all these football related things we'll talk about, but Arsenal के बहुत सारे chants हैं. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. Oh Arsenal, we love you. 1-0 to the Arsenal, 1-0 to the बहुत सारे हैं, ऐसे तो हम करते रहेंगे. Havertz की chant है, Super Mikateta chant है, Sweet Caroline based chant है, North London Forever is the intro song. Then the typical Arsenal, 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 all of these things है. स्पेन में एक बार मैच देखने का सपना पूरा होगा, होपफुली ब्रदर, होपफुली. डू यू थिंक देयर विल बी अ हायर पोटेंशियल आफ्टर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन डीबी सुपर? भाई, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना, जब लगता था वाओ सुपर सेन 2 3, सुपर सेन गॉड, सुपर सेन 4, फिर फ्यूजन्स बहुत सारे आ गए थे. दिस सुपर सेन एट 100%. आई थिंक अगर उसके ऊपर करना पड़ेगा, लाइक मे बी दे कैन मेक इट लेजेंडरी सुपर सेन, बट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर और क्या पावर लेवल है? सी, हियर इज द थिंग. ड्रैगन बॉल जी पावर स्केल्स गेट सो आउट ऑफ वैक इज बिकॉज वी डोंट इवन नो हु इज द अल्टीमेट बीइंग. एक पॉइंट पे लगता था अच्छा नहीं, ये सारे फ्रीजा वगैरह होंगे. फिर मार्जिन बू आ गया. फिर लगा अच्छा मार्जिन बू फ्रीजा से ज़्यादा है, तो चलो मार्जिन बू है. उसके बाद आपको बीरस एंड वीस दिखे. फिर आपको मतलब एक पॉइंट पे ब्रोली था, जमासू था, फिर जीनो था. तो देन यू डोंट रियली नो, बिकॉज द स्केल केप्ट ऑन गेटिंग बिगर, राइट? इट वाज अर्थ एंड सम प्लैनेट्स. फिर यूनिवर्स की बात आ गई. फिर मल्टीवर्सेस आ गए. फिर दो जीनो आ गए, तो दो रियलिटीज आ गई. तो बहुत सारी, आई थिंक फॉर मी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर्ड इज मैक्स. अब जब सुपर सेन ब्लू था, एवरी वन थॉट सुपर सेन ब्लू इज द लाइक कैप. सुपर सेन ब्लू के ऊपर कुछ जा ही नहीं सकता. फिर उसने सुपर सेन ब्लू के ऊपर कायोकेन डाल दिया था जब वो हिट के साथ फाइट कर रहा था, ठीक है. बट फिर जिरेन आया, तो जिरेन के बाद एक और नया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ गया. फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ गया. अब उसमें वो कायोकेन डाल देगा, या फिर उसमें मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन 5, पता नहीं क्या है. सो आई डोंट नो ब्रो, जस्ट लाइक इन वन पीस वो कितना गेयर्स बढ़ते रहते हैं उसके, राइट? कितनी सारी चीजें होती हैं. इन नारुतो एज वेल, अगर आप देखो, पावर स्केल जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग. if you if you have watched the entirety of Naruto and even Boruto, आपको याद होगा राजंगान बनाने में उसको इतना टाइम लग गया था. एक पॉइंट था जब उसने फर्स्ट टाइम राजन शुरुकेन यूज किया था, उसको बोल दिया था कि यू कांट यूज राजन शुरुकेन अगेन बिकॉज यू लूज योर हैंड, ठीक है. और फिर तो अब तो राजन शुरुकेन तो मस्ती मस्ती में ही मार देता है ये बंदा, ठीक है. फिर उसके बाद सेज मोड लगा, वाओ सेज मोड इज सो नाइस. फिर सेज मोड के बाद कुरमा मोड आ गया. कुरमा मोड के बाद फिर बेगॉन मोड आ गया. मतलब इट जस्ट कीप्स हैपनिंग. उसके बाद आपको लगा था ठीक है, मतलब यूल गेट द शारिंगान, यूल गेट द ब्याकुगान, यूल गेट दिस, यूल गेट. एंड फिर उसके बाद वो ये नई वाली आइस का क्या नाम है यार, मैं भूल गया उनका नाम. बट या देन यूल गेट न्यू सॉर्ट ऑफ आइस. सो इट्स जस्ट so many levels of power, man. You'll never really know when it ends. Not related, but why does every chant song in the UK sound like nursery rhymes? Because they're all usually from working men in clubs, and it's just songs. I don't know if it sounds like nursery rhymes and stuff, but they're not too far away. They're not too far away. I think it's just pub songs. That's it. बारसा की कोई न्यूज़ है? कोई न्यूज़ नहीं है. बस बारसा इज जस्ट अ क्लब राइट नाउ इन स्पेन. मस्ती कर रहा है हैंसी फ्लिक के अंडर, यही न्यूज़ है अभी तक तो. What is my review of Sparking Zero? Fantastic game. I think they've done a very solid job with the combat, and I think they've done some really really solid job with the what if timelines. मैंने गोकू की सेल आर्क तक टाइमलाइन खत्म कर दी, तो फ्रीजा को हरा दिया. बट फ्रीजा की व्हाट इफ स्टोरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है. एक एक बेसिकली व्हाट इफ स्टोरी होती है. तो अगर आपको याद है ड्रैगन बॉल की रेगुलर स्टोरी में कि वेजिटा फाइट्स फ्रीजा, फ्रीजा वेजिटा को हरा देता है, फ्रीजा क्रिलिंग को मार देता है, और उसके बाद फिर सुपर सैयन में कन्वर्ट होके गोकू उसकी धुलाई कर देता है. बट देन देर इज ऑल्सो अनदर व्हाट इफ कि
एक में क्या होता है, वेजिटा बीट्स फ्रीजा, वेजिटा गोes सुपर सैयन एज डज गोकू, एंड फिर वेजिटा एंड गोकू की सुपर सैयन फाइट होती है नामेक पे, एंड नामेक डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। एक पूरा आर्क है जहाँ पे नामेक डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड एट ऑल। बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पार्किंग जीरो स्ट्रीम करो भाई, मोस्ट लाइकली संडे को करेंगे यार। हाँ हाँ, जोगुन। या तो बहुत सारी चीजें होती है। मित्सकी को क्या, मित्सकी की ओरिजिन स्टोरी इज अ कंप्लीटली वियर्ड थिंग। एनीवेज व्हाटएवर, मतलब ओरोचिमारू एक पॉइंट पे उसके प्लान्स चेंज हो जाते हैं, होकागे देन रीएनिमेशन हो जाता है। वह बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर टू मेनी पावर लेवल्स यार, टू मेनी पावर लेवल्स इन ऑल दीज शोनेन type anime. Is it easy to secure a fully funded PhD abroad? What are the things that can enhance the chances? For a PhD, your project has to be absolutely spectacular, your master grades have to be absolutely fantastic, and your vision has to be absolutely clear. ये यार, इट्स जस्ट प्लानिंग। मैंने 2 दिन से कोई स्ट्रीम नहीं करी। कल मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रहा था, कल आज भी पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, कल पूरे दिन रेस्ट था, आज पूरे दिन पढ़ाई है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डू अ चेस स्ट्रीम, -5K सब्स गारंटीड। -5K सब्स क्यों? चेस स्ट्रीम में मजा आएगा। चेस स्ट्रीम में मतलब सबसे बड़ा इशू क्या होता है? चेस स्ट्रीम में आई फील, one, you have to be super engaging in the chat, but also I don't think a lot of people will watch you if you're bad at chess, because I think people will watch you if you're great at chess. One, if you're bad at chess, people will just log off because a lot of people are not interested in chess anyway, and why would they waste their time watching someone be bad at chess? But also there is so much, um, जिसको कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग। आप लोगों ने देखा है कुछ लोग जो पीछे बैठ के ड्राइविंग करते कि ऐसे नहीं चला, ऐसे चला, धीरे चला, तेज चला, इधर मत घुमा, इंडिकेटर दे। बैक सीट ड्राइविंग, तो आई थिंक चेस में बहुत ज्यादा बैक सीट ड्राइविंग होती है कि यू टेक दिस मूव, एंड इट्स सो इनकोहेरेंट। बिकॉज अगर इस बंदे ने बोल दिया नाइट से लो दक्ष भाई, इसने बोल दिया पॉन से लो दक्ष भाई, इसने बोल दिया कैसल करो, एंड देन यू टेक लेट्स से हिज, कि आपने चलो नाइट से ले लिया, एंड देन यू एंड अप लूजिंग द गेम, देन दिस गाय एंड दिस गाय विल बी लाइक, मैंने तो बोला था कैसल करो, मैंने तो बोला था पॉन से लो, यही करना चाहिए था। सो दैट्स द थिंग। आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकम, कितनी बैक सीट ज्यादा हो जाती है, बैक सीट एक्शंस, ओ यू शुड हैव डन दिस, यू शुड डन दैट, देन योर ओन गेम डज नॉट रियली डेवलप, यू नो। साका अपडेट, देर इज नो साका अपडेट, एंड प्लीज डोंट डू साका अपडेट। और ये बंदा ये जीत गया, या फिर ये बंदा, ट्रस्ट मी, आई एम मोर इन ट्यून अबाउट फुटबॉल ट्विटर एंड फुटबॉल देन यू गाइज विल एवर नो। मैरेस्का मैन ऑफ द मैच जीत, मैनेजर ऑफ द मंथ जीत गया, डुरान गोल ऑफ द मंथ जीत गया, पामर प्लेयर ऑफ द मंथ जीत गया, सब पता, सब पता। Do you have plans to push Insta as well? I can't do it. Unfortunately, I can't hack Instagram. I have sort of given up on it. Because Instagram is just one of those things, brother, where I don't know what makes it work. YouTube I can. YouTube Shorts I can make it work, which good news. 15 अक्टूबर से longer YouTube Shorts आ जाएंगे, 3 मिनट तक के आ सकते हैं, so I can make those blind ranking ones even better now. But it's just so complicated, bro. मतलब जो चीज़ यूट्यूब पे चलती है वो इंस्टाग्राम पे नहीं चलती, बिकॉज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की ऑडियंस बड़ी डिफरेंट है। The algorithm pushes content very differently. So I don't really know how to make Instagram work, bro. I really don't know. अरे ये बता तो दिया मैंने दोस्त, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एनी वेज टू गेट अ जॉब इन F1 डिपेंड्स ऑन व्हाट जॉब यू वांट। आई नो पीपल हु वर्क एज लॉजिस्टिक्स पीपल इन F1, एंड अगर आपको इंजीनियर बनना है तो भाई मतलब यू हैव टू बी द बेस्ट इंजीनियर। एडिटिंग शॉर्ट्स इज मोर डिफिकल्ट देन एडिटिंग वीडियोस। Think shorts have a very high risk high reward ratio. Sometimes what will happen is, well, first of all, अगर आपकी शॉर्ट चल गई, it will be spread like no other piece of content. But also, your shorts will get the most viewage, but also they'll earn the least amount of money, but also they can get you the most amount of subs. But shorts have to be engaging in every possible second, because otherwise लोग, बिकॉज आपकी शॉट जब, अनलेस आपकी शॉट पहली शॉट हो जो उन्होंने यूट्यूब पे खोल के देखी है, देर इज अ गुड चांस। फर्स्ट शॉट्स आपके होम स्क्रीन पे अगर आ जाए, देन इज अ वेरी गुड चांस। बट इफ यू आर इन द मिडल ऑफ अ डूम स्क्रोल, ओवर फॉर यू ब्रदर, ओवर फॉर यू। माई top 5 favorite anime are Attack on Titan, Naruto, Dragon Ball. Actually, Dragon Ball, Attack on Titan, Naruto, स्पाई फैमिली, बहुत है, विनलैंड सागा, दिस टू मैनी।
बहुत सारे, बहुत सारे। क्या लगता है F1 चैंपियनशिप कौन जीतेगा? मैंने फॉलो ही नहीं किया दोस्त, बट लोग कह रहे लैंडो जीतेगा, सो आई एम गेसिंग लैंडो भी जीत सकता है। um yeah, have you ever watched Red Line anime? I have not. Have you eaten in Gordon Ramsay restaurants? I have not. I prefer actually family owned restaurants, man. I don't like these commercial restaurants too much. So if I go to a cafe, I try not to go to a cafe which is a chain, Starbucks, Costa, वगैरह. I try not to go there. Either, especially if you have a smaller cafe or a family owned cafe or a business cafe, I like those more. I like those more. Daksh bhai, I have never asked, but I want to say, who's your favorite athlete or sports person? My favorite sports person of all time is Kobe Bryant. But there's also Mike. Most of my favorite footballer को हटा के मेरे favorite athletes are all NBA players. All NBA players. Because I think उन लोगों की जो global iconage है, that is unparalleled. Nobody will have. I know सब कहते हैं wow LeBron James US में ही famous and no, everyone knows LeBron James and everyone knows Michael Jordan and everyone, okay, most people will know Kobe Bryant, but I think NBA वालों की marketability सब चीज़ें बहुत 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 interesting है. How's my fantasy team looking like? Not great, to be honest. Not great at all. I went triple Arsenal defense against Southampton and they conceded a goal. So, yeah, it sucks, brother. It sucks. My favorite team in IPL, we will decide this time. हम फिर से जब IPL शुरू होगा, जब इस बार है क्या ऑक्शन वगैरह? I don't think इस बार ऑक्शन है. But when the draws are made, when the matches are announced, then we'll again do a Twitter poll on which team we support this season. So we will support a different team every season, unless, of course, people vote for the same team. I feel simplicity works best in instant. Trust me, you have to be very consistent. Yeah, brother. Yeah. MI मत लेना प्लीज भाई. जो कहेगा ये वाली मत लेना, वो तो मैं 100% लूंगा. मेगा ऑक्शन है. Oh god damn. All right. Tom Brady, I don't watch too much NFL. I know the rules. I know how the game works. I just don't know about the lore of the game. That's it. मेगा ऑक्शन है इस बार. चलो, दैट इज हाउ यू नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आईपीएल. तो ठीक है, मेगा ऑक्शन के बाद वी विल फिगर आउट विच टीम आर वी सपोर्टिंग दिस सीजन. MIM programs are better equal to MBA programs. I have not taken either of those degrees, so I can't really tell you. Like that's like me asking, brother, is the Irish coffee better or is Irish whiskey better in terms of alcoholic drink? And then you've had neither, तो आप कैसे बताओगे मुझे? Caventers is so freaking good. Do try it out. Caventers तो भाई is बचपन का भाई. Caventers before it became a chain was my favorite place to go. Like actual OG Caventers at CP. इंडिया में कहाँ से है वो भाई आप? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ था. Will you be doing FC25 with Baba? We will try. We will try. There is another thing that I've been trying to work on, but time नहीं मिल रहा है. कल I will work on that thing, and maybe by next week you will see something. It's a new project I've been working on. Be neutral, Daksh bhai. IPL is just full of nail biting matches. Yeah, but then what's the point, right? Like, of course, I watch IPL when I get time to watch IPL. ठीक है? But to root for a team is fun because you start cooking up imaginary rivalries with people. Like last season, I joined MI and मस्ती मस्ती में will cook RCB या मस्ती मस्ती में will cook पंजाब or whatever. न्यूट्रल होके कोई प्रॉब्लम, न्यूट्रल तो आप फिर भी रह सकते हो रियलिटी में, बट आई जस्ट फील कि गेमिंग विद दक्ष, नो दैट्स नॉट गेमिंग विद दक्ष. Gaming channels are very obvious, but no, I don't want to start a gaming channel. I joined MI. Yeah, brother, we joined MI. And this season, I don't know, maybe this season we'll see who we join this season. We'll see who we join this season. Who we get traded to, who we get transferred to, who we loaned out to. हर मैच में एक टीम को रोस्ट करना भाई, हमेशा ब्रदर, हमेशा. With MI, my meme game was absolute top, okay? Because I was MI and Drog Baba was CSK और हमारी चलती रहती थी. ठीक है, support SRH. We will see. We will when the mega auction happens. When the mega auction happens, उसके बाद we will do a full Twitter
break down into where we are going. Okay, CGI यूके से आपका कोई इंग्लिश आयरिश फ्रेंड ने चार्टर्ड सेक्रेटरी किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. IPL stocks. Look, I'm not into cricket at all, but we are just doing it for the memes. Which sport did you used to play? I used to play basketball, I used to play football, and I used to play cricket much before that. Cricket at club level, uh, football, basketball तो एमी एमी. Basketball मेरी school team का था बस. I miss your cricket tweets by the way. They'll be back, brother. They will be back. MI को ही support करना. We are champions is lucky. Ever try to explore Web3? Nah, man. I think I was getting out of engineering and tech when Web3 and NFT and everything became like hyper popular and the metaverse became hyper popular. So it's always sounded interesting, Web3, but just never happened for me. Never happened for me. Us time I was just honing up my. Us time I started learning about geopolitics properly. So everything was there. What is my height? A lot of people think I'm short, but I'm not short. I am actually 6 foot. So that's my height. I'm thinking to do it after completing it from here. All right, best of luck, Karan bhai. Best of luck to you. Which YouTube content is more profitable, gaming, vlogging, or something else? Oh, the most profitable vertical in YouTube is finance. If you can talk about finance and if you can get a lot of reach in finance, you will get a lot of money. I think it's the highest paying vertical. Um, I think gaming is the lowest paying vertical, especially gaming in Hindi, because it's a crowded space. Plus, if you're gaming in Hindi, you're also being showcased to only certain countries, and your revenue is not that great. But your audience will be absolutely massive, especially if you're great at the game. Look, here is the thing. अगर मान लो आज कौन सी अच्छी गेम आ रही है, लेट्स से फीफा आ गई, ठीक है. नाउ लेट्स से फीफा है एंड देयर आर एटलीस्ट 60 पीपल स्ट्रीमिंग फीफा 25 FC 25, ठीक है, ऑल इंडियन. मैं तो फॉरेन की बात भी नहीं कर रहा. लेट्स से 50 लोग इन हिंदी में FC 25 स्ट्रीम कर रहे हैं. उसमें से 40 बहुत बेकार हैं और जो रिमेनिंग 10 है, मतलब 40 लोग मस्ती मस्ती के लिए खेल रहे हैं, बाकी 10 लोग कंपेटिटिवली बड़ा अच्छा खेल रहे हैं. तो क्या होता है, ऑडियंस अच्छा फीफा देखने के लिए जाते हैं, बिकॉज गंदा फीफा तो कभी कभी वो लोग खुद भी खेल लेते हैं, बट दे वांट टू सी व्हाट्स रियली पॉसिबल. सो gaming channels are a lot of work because not only do you have to have an entertaining personality, you not only have to invest in a gaming console or a great PC and a good setup. बिकॉज अगर आप एक गंदे सेटअप में करोगे, लोगों का मूड ऑफ हो जाता है. ये मैंने चीज़ देखी है कि अगर आप अपने बैकग्राउंड का, अपने कैमरा का, अपनी लाइटिंग का ध्यान नहीं रखोगे, अपने माइक का ध्यान नहीं रखोगे, लोग नहीं देखेंगे. बिकॉज पीपल नाउ आर सच यूज टू सच गुड क्वालिटी कॉन्टेंट दैट इवन एवरेज क्वालिटी कॉन्टेंट फील्स लिटिल सब पार. ठीक है. एंड सो दैट्स द प्रॉब्लम. गेमिंग में आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, बैकग्राउंड, पीसी, ग्राफिक्स, माइक, but also you have to be fantastic at the game to retain your audience, I feel, or you have to be hilarious in your personality. One of the things has to be out there completely. आप ऐसे नहीं हो सकते कि हाँ चैट, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, अबे यार ये तो उसने ये कर दिया. मतलब you can't have a dead personality and you can't be average at the game. If you have a dead personality, be fucking phenomenal at the game. And if you're average at the game, you have to have a phenomenal personality no matter what. So, and I think that's with live streams also, right? Like if we go to YouTube right now, and is there a live tab on YouTube? I don't even know, to be honest. Audio recommendations live. All right, wait, let me see. All right, let's see this. ठीक है. अगर आप लाइव पे जाओ, चैट, लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल लाइव स्ट्रीमिंग. 1.4K वॉचिंग, 13 वॉचिंग, 176 वॉचिंग, 218K. चलो कुछ कुछ तो ऐसे हैं 10K वगैरह, वट एवर, 2.9K. इसमें सिर्फ मेरे ये वाले आ रहे हैं क्या, और कुछ नहीं है? आई एम प्रिटी श्योर आपको, मतलब यू बेसिकली कैन गो टू यूट्यूब लाइव, यूट्यूब किड्स, यूट्यूब स्टूडियो, स्पोर्ट, गेमिंग. लेट्स गो टू गेमिंग फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आप गेमिंग में जाओगे एंड आप टॉप लाइव पे जाओगे. चलिए, तो गेम लिस्ट आ गए.
But essentially, shorts, trending videos. Nah, just show me the live streams, man. There used to be a live tab, which I don't know why it's not there anymore. Yeah, I don't know where the live tab isn't there. खैर जो भी है, आपको इतने सारे लोग लाइव्स दिखते हैं, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों में आप कैसे देखोगे। दैट्स इट। दक्ष भाई टिप्स तो दूसरे धर्म, अरे बस 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 बस, आपको ये शब्द भाई, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आपको थोड़ी ऑडियंस भी समझनी पड़ेगी कैसे होते हैं। मूवीज रिव्यूज के लिए कौन से चैनल फॉलो करते हो? ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक, like I have very specific channels, बहुत कम, otherwise I take from everywhere. For example, for game reviews and especially deep dive, I do White Light, and for anime I do Diavolo and Giguk. That's it. तो वही वाली बात है यार, ऐसा कुछ मेरा स्पेसिफिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट राइट दिस रिव्यू, watch it for 10 minutes. If it makes sense, keep watching it, otherwise no. Do you watch James Lawrence Alcott? Yes, I do. He is one of my favorites. Did you use OpenAI O1? Are we getting into that AI age now? No, not at all. And I'll tell you why. There was this friend of mine who reached out to me after my stream on Manchester City, and he said, "Daksh, तूने गलत बोला City के शेयर होल्डर्स वाले, ट्राइब्यूनल के शेयर होल्डर्स वाले पे। द ट्राइब्यूनल हैज एक्चुअली अग्रीड टू द प्रीमियर लीग कि ये ज़रूरी है और शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या बोल रहा है, मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है। He sent me a screenshot of his conversation with AI where he fed the judgment to the AI and he asked it for the summary and he asked it for the shareholders thing. And the AI still hallucinated. So Abhi AI is still far away. It's fantastic, but it's still far away, I think. Do you think there is a skill gap in the market? That's why mass layoff along with AI. I wish I could tell you a definitive reason why there are mass layoffs. Mass layoffs can happen for a variety of reasons. Loss making companies, se leke over employment, or people asking for a lot of salaries, uh, or just AI. You never really know, man. What about it? It's going. It's going. The only anime I ever watch, I try not to talk about the other channel. And if someday somebody finds that channel, that's fantastic, man. If they don't, they don't. Do you like watching movies like Godzilla, X King Kong, and Planet of the Apes New Dawn? I love watching Monsterverse movies, man. Monsterverse ka bhi, there's a fantastic YouTube channel, right? Gojiverse है उसका नाम, I think. Gojiverse, that's what it's called? Yeah, Gojiverse. Gojiverse is fantastic, man. Beautiful, beautiful channel. Goji Center and no, sorry, not Gojiverse, Goji Center. That Goji Center, fantastic channel, bro. I love it so much. And I was like, ये channel ये तो डेड हो जाता होगा जब कोई गॉडजिला या कोई मूवी नहीं आ रही होगी, बट ही एक्चुअली डज रियली रियली गुड चैनल मैन। ये हर मॉन्स्टर पे जाता है, स्पाइनो पे, गॉडजिला लॉस्ट वर्सेस दिस एप एंड इट वाजंट कॉन्ग। ही एक्चुअली गोज इनटू द फुल लोड टाइटैनस अबैडन पे। इफ यू लुक सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, दे डू फैंटास्टिकली वेल भाई। 7.5 मिलियन व्यूज इन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पे, and Skull Island pe, Indominus Rex versus Skullcrawler. He does fantastic videos, man. I love it. I love it so much. कौन सा genre है your faceless channel? Won't tell anything about it. The entire point was to see how big it can get. Series देखी Monarch Legacy? Yes. Daksh bhai, have you watched Manvat Murders? You will have a total mental breakdown after watching. All right. आपको किसी ने कभी स्कैम किया है? एज अ किड आई गॉट स्कैम्ड वंस व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई वाज कमिंग बैक होम फ्रॉम अ फ्रेंड्स हाउस। मेरे को मेट्रो लेनी थी, तो मैं ऑटो से जा रहा था उसके घर से मेट्रो स्टेशन। एंड सो देयर वाज दिस वन किड हु केम अप टू मी। इट वाज सैटरडे, तो वो आया था, शनि का लिख के आया था कि यार अरे लाइक शनि है, ये है वो है। एंड मैं वो लाइक आई बिलीव इन शनि अलॉट। सो मैं उसको दे रहा था पैसे, मैंने अपना वॉलेट खोला, ही सॉ अ 2K का नोट एंड ही स्नैच्ड इट and it just happened so fast I couldn't even recognize. So it's not a scam, it's basically theft.
बट एज अ किड मेरे साथ ये स्कैम हुआ था। बाकी स्कैम तो यार लाइफ में होते रहते हैं, लोग धोखा दे देते हैं, ये सब करते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ाई करने जाता हूँ मैं भी यार, 5 मिनट में निकल रहा हूँ। आज एक छोटी सी ही स्ट्रीम होगी, बट या मेरे को भी पढ़ाई ही करनी है इसके बाद। दी ओनली एनिमे आई एवर वॉच ड्रैगन बॉल। मन बहुत करा डीबीजी लेने का, ले लूँ क्या? हाँ, ले ले यार, अगर तेरे को अच्छा लगता है एनिमे तो बहुत अच्छी बात है। ब्रदर वेयर्स शनी एंड वेयर्स ब्लैक एवरी डे। हियर इज माई थिंग, आई लाइक फॉर मी, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है? लाइक इसके बाद इस दिन को नाखून मत काटो, इस दिन बाल मत काटो, इस दिन नॉन वेज मत खाओ। आई डोंट डू ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई डू बिलीव इन गॉड्स दो, बट ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत काटो। I don't like, I'm not ascribing to all of those things because I think these are so arbitrary, man. कि like ट्यूसडे ट्यूसडे को इस भगवान का दिन होता है इसलिए मत खाया करो। अगर भगवान रियली जस्ट हैड अ प्रॉब्लम विद मी ईटिंग फूड, ही वुड हैव अ प्रॉब्लम विद एवरी डे। दैट लीस्ट दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, बट आई डोंट हैव लाइक ये उस उन स्पेसिफिक ट्रेडिशंस, डेली ट्रेडिशंस पे या फिर ये पहनने के ट्रेडिशंस पे मेरे हिसाब से। सो या मैं तो ट्यूसडे को जबरदस्ती खाता हूँ। मतलब आई डोंट लाइक गो आउट ऑफ माई वे टू मेक श्योर कि लाइक ओ ट्यूसडे आज तो खाना ही पड़ेगा जस्ट टू चैलेंज गॉड और समथिंग। बट आई जस्ट फील, if you want to observe an abstinence from meat, then observe it every day. What is making Tuesday so special? अगर आपको एब्सटिनेंस रखनी है भगवान को खुश करने के लिए, तो ट्यूसडे ही क्यों चुना है भगवान को खुश करने के लिए? वेंसडे भी करो, थर्सडे भी करो, फ्राइडे भी करो, सभी दिन करो यार, ठीक है? सेम चीज, सैटरडे को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, क्यों? सो आई डोंट नो मैन, दस मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत है। वो आप स्पाइडरमैन नहीं बने। डिड यू वॉच कंप्लीट अननोन ट्रेलर बॉब डिलन बायोपिक? आई हैवंट। व्हेन डिड यू फर्स्ट लीव इंडिया? इन द फर्स्ट टाइम आई लेफ्ट इंडिया, ओह, if you're talking other than travel, then 2018 for the US. Daksh bro, what's your age? I am 29. In a month and 10 days I will be 30. Can you at least tell me the genre in which you have your second channel? No, I cannot. After COVID, I was naturally inclined towards Shiva. Fantastic, yeah, fantastic. I think finding God is, I think if it happens to you, that's great. If your belief system grows, I think it's great. And if it doesn't happen, that's also fine. That also is fine. What is my favorite merchandise? Anime merchandise pasand hai kya? Yes, brother. Look, I'm wearing One Piece today. Um, so yeah, I think if sometime in your life you get a belief in a higher being, दैट्स ग्रेट फॉर यू। मेरे हिसाब से तो अच्छी बात होती है। इट्स कंफर्टिंग, इट्स थेराप्यूटिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इफ यू डोंट ऑल्सो, एंड इफ यूर एन एथियस्ट, दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। रियली, आई थिंक वी आर, हमारी लाइफ खुद इतनी मॉर्टल होती है ना, दैट इन पेटी स्क्वॉबल्स पे कि कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, हम कैसे आए, दीज आर जस्ट सो इमटेरियल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। It doesn't really matter. I am not an atheist. I'm more of an agnostic kind of person. But I do believe in a, like, मेरे को spirituality अच्छी लगती है in that sense. If God really exists, I don't think he cares about these rituals. I agree. What's my profession? I'm a PhD student, researcher. मेरे को मस्त लगता है गेम. Is it worth it though? FC 25 ले लूँ या DBZ, समझ नहीं आ रहा. Longevity के लिए FC, instant मस्ती के लिए DBZ. डीबीजी में तुमने स्टोरी खेल ली और तुम्हें ऑनलाइन नहीं खेलना, तो तुम्हें अपनी ही, मतलब देर आर ओनली फ्यू थिंग्स यू विल बी एबल टू डू। उसके बाद यू विल हैव टू वेट फॉर द डीएलसी, यू विल हैव टू प्ले इन द यामचा गेम्स और क्रिएट योर ओन टूर्नामेंट्स, और यू विल हैव टू मास्टर कैरेक्टर्स। दैट्स ऑल यू कैन डू इन, मेरे हिसाब से, डीबीजी। फीफा, फीफा इज अ लॉट मोर मैन, लाइक इतनी रिप्लेबिलिटी वैल्यू होती है फीफा की। डू यू बिलीव जिरेन वर्सेस गोकू इन द टूर्नामेंट ऑफ पावर ब्रोक द इंटरनेट? I think it broke the internet because there was a new power level to Goku, and it broke the internet because of Frieza and Goku, and it broke, मैं बहुत सारी चीज़ें हुई थी यार जेरेन वाले उसमें। तो देखते हैं, अलमाटी ट्रिप 50K में हो जाएगी भाई। मैं ना ट्रैवल एजेंट हूँ ना मैं अलमाटी गया, तो मुझे तो नहीं पता। डू यू थिंक पीपल आर बिकमिंग मोर एग्नोस्टिक एथियस्ट इन दिस जनरेशन? आई डोंट नो, वील नेवर नो।
Um, I know people who are super religious through multiple um, generations. I know people, like, for example, मेरे हिसाब से one of the things SSP is, what is the line between religious and agnosticism and atheism? For example, let's say you personally do not believe in a god, but let's say you're observing नवरात्रे के 9 दिन का, मतलब आप नवरात्रों में व्रत रखते हो, तो आप क्या हो? आप एग्नोस्टिक हो या आप रिलीजियस हो? बिकॉज आप ट्रेडिशनलिस्ट तो डेफिनेटली हो, बट देन व्हाट इज इट? वेयर इज द लाइन? You don't eat non-veg on Tuesday, but you don't really particularly believe in any sort of god. तो आप क्या हो? Maybe you go to the मंदिर और आप अपनी नई गाड़ी पे वो पंडित जी से ब्लेसिंग्स करवाते हो, बट आप भगवान को नहीं मानते। So what is the line? Like, I don't think there is a discrete line beyond which you're an agnostic and a discrete line before which you're a religious person. Same with atheism also, मेरे हिसाब से। Goku absorbing the spirit monk going ultra instinct broke the internet. To be fair, the fight, yeah, for sure, for sure. उमेश भाई तो 50 के बस ई फुटबॉल पे ही लगा देते हैं, घूमना क्या है? उमेश भाई डेली मैकेनिक का काम ई फुटबॉल के लिए ही करते हैं। 50 के में माटी की ट्रिप तो यार मुझे नहीं पता यार। एक सेकंड। केवाईसी नो योर क्रिएटर कब आएगा दक्ष भाई? नो आइडिया, जब सबके पास टाइम होगा यार। योर सब टारगेट टिल द ईयर्स एंड 25, 25 टिल द ईयर्स एंड शुड बी गुड। एओटी देखा? फुल देख लिया, फुल देख लिया। केवाईसी हो गया। चलो चैट, अच्छी छोटी स्ट्रीम थी, नाइस 1.5 आवर सॉर्ट ऑफ डन। स्ट्रीम एंड करते हैं, मेरे को पढ़ाई करने जाना, आप लोग भी अपना दिन कंटिन्यू करें। इट्स लंच टाइम हियर, इट्स इवनिंग देयर, आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल कम हियर। कल हम एक स्ट्रीम करेंगे टॉकिंग अबाउट आर्सेनल, स्पेसिफिकली द इंजरीज टू ओडेगार्ड एंड साका, and so we'll talk about it tomorrow. All right, chalo, see you all soon, talk to you later, and see you.